Okay, now the next topic we start today is it's a very important topic, force in vector form. In this force in vector form, let in the ijk plane we have two charge particles, suppose q1 and q2 placed r1 and r2 position. We have to find out the force between the two charge particles. Let this is the first particle, let this is the second particle. This is the distance between the two charge particles. So what we know, force, the formula is 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. But here force is a vector. As the force is a vector, so we have to introduce a unit vector. Now when we introduce a unit vector, now what happens, देखो अगर मुझे force at 1 due to 2 चाहिए, ध्यान से समझो इस बात को, 1 पे 2 के लिए चाहिए, तो हम लोग क्या करेगा, 1 पे 2 के लिए तो हम लोग यूनिट वेक्टर 2 1 यूज करेगा. सिमिलरली अगर 2 पे 1 के लिए मतलब 2 पे 1 के लिए चाहिए, सो हम लोग यूनिट वेक्टर 1 2 यूज करना है. सो हम लोग क्या करेंगे, फोर्स 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर 2 1 कैप. अब यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या है, यूनिट वेक्टर है फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, और यह है वेक्टर पोजीशन वेक्टर. और यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या है, vector by magnitude. So if we put this, so what happened, force of 1 2, that is 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square into r of 2 1 vector by r2 minus r1 vector. So यहाँ पे देखो पावर स्क्वायर है, यहाँ पे पावर 1 है, so ओवरऑल हमें क्या लिख सकता है, 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r of 2 1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 और 1 3, क्योंकि ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, r of 2 1 वेक्टर. और इसको हम और अगर अच्छा से लिखना चाहे, फोर्स एट 1 due to 2 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r of 1 minus r of 2 का क्यूब 2 1 मतलब 1 minus 2 वेक्टर 1 minus वेक्टर 2. सिमिलरली अगर मुझे फोर्स एट 2 due to 1 करना है, 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r2 minus r1 वेक्टर क्यूब r2 minus r1 लिखना है. तो इससे मुझे मेनली याद क्या रखना पड़ेगा, मुझे मेनली ये याद रखना है, क्या याद रखना है, फोर्स एट 1 ड्यू टू 2 मतलब 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 mod r1 minus r2 का होल क्यूब विद इन ब्रैकेट r1 minus r2. अगर फोर्स एट 2 ड्यू टू 1 चाहिए तो 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r2 minus r1 mod क्यूब बाई ब्रैकेट में r2 minus r1. मतलब अगर यहाँ पे 1 2 के जगह पे pq बोले pq, तो p minus q q p q minus p. मतलब यहाँ से एक बार सिंपल हो गया, 1 2 मतलब 1 पे 2 के लिए, 2 1 2 पे 1 के लिए, मतलब at 1 due to 2 1 2, at 2 due to 1 that is 2 1. Okay, let's start a numerical. Suppose we have two charge particles, 2 microcoulomb and minus 4 microcoulomb at position r1 2i minus j plus 3k meter and r2i plus 2j minus k meter, and we have to find out force at the second particle due to the first particle, which is force at 2 due to 1. तो वेरी सिंपल, जब भी मुझे ऐसा क्वेश्चन आएगा मैं सीधा फॉर्मूला लिखूंगा, at 2 due to 1 that is 1 by 4 by epsilon naught q1 q2 by r2 minus r1 cube
R2 माइनस R1। तो मेरे को सबसे पहले R2 माइनस R1 मुझे चाहिए, तो पोजीशन वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल I प्लस 2j माइनस k माइनस 2I माइनस j प्लस 3k विच इज माइनस I प्लस 3j माइनस 4k। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो फ्रॉम द वेक्टर फॉर्म मुझे मालूम है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 9 प्लस 16 दैट इज 26। So after that what we write 4 such 2 due to 1 equals to 9 into 10 to the power 9 into 2 into 10 to the power minus 6 minus 4 into 10 to the power minus 6 by root 26 का cube into R2 minus R1 minus I plus 3j minus 4k which is 9 into 2 into 4 by 26 root 26 into 10 to the power minus 3। ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, सो प्लस I minus 3j plus 4k। अब तुम लोगों का मन में एक डाउट है कि सर यहाँ पे नेगेटिव साइन लिया है और पहले में जब फोर्स का न्यूमेरिकल किया वहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला था, नेगेटिव साइन नहीं निकाला था, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो उसमें क्या था, उसमें तुम डायरेक्शन बता रहे हो टुवर्ड्स अवे है, टुवर्ड्स ए टुवर्ड्स बी अवे आई जे, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा कुछ भी फिक्स नहीं है, जो आई जे के दिया हुआ है इसी हिसाब से लिखना है। तो यहाँ पे ये साइन लिखना जरूरी है, अगर ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सिमिलर चार्ज रिपेल, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। यही अगर सब कुछ सेम रहता, सिमिलर चार्ज होता, इसका जो डायरेक्शन होता, एवरीथिंग इज सेम, जस्ट एक चार्ज को हम प्लस के जगह पे माइनस कर दिया, ये उल्टा हो गया, मतलब नेगेटिव साइन ऐड हो गया। ओके, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। देखो कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशंस में क्या है, पहला है कि कूलम्ब्स लॉ वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज पार्टिकल ओनली। इफ पॉइंट चार्ज पार्टिकल से इफ द शेप बड़ा हो जाए देन कूलम्ब्स लॉ इज नॉट अप्लाइड, मतलब इट्स वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज पार्टिकल। सेकंड पॉइंट क्या है, कूलम्ब्स लॉ वैलिड फॉर टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम। इफ मोर देन टू चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट देन वी यूज सुपरपोजिशन थ्योरम, मतलब दो से ज्यादा पार्टिकल के लिए हम लोगों को इंडिविजुअल सबका फोर्स देखना पड़ेगा, जो कूलम्ब्स लॉ के लॉ ने नहीं बताया है। तीसरा लिमिटेशंस क्या है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल मस्ट बी लेस ग्रेटर देन 10 to the power minus 15 मीटर। क्यों? अगर 10 to the power minus 15 मीटर से ज्यादा होगा तो फिर ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा। अगर 10 to the power minus 15 मीटर से कम होगा तो क्या होगा, अगर 10 to the power minus 15 मीटर से कम होगा तो न्यूक्लियर फोर्स इज एक्टिव। सो इसका जो लिमिटेशंस है कि ये 10 to the power minus 15 से ज्यादा के लिए वैलिड है। तो यहां तक तुम्हारा फोर्स है। नेक्स्ट जो वीडियोज आएगा मेरा वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड आएगा, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, शायद तुम लोगों को काफी अच्छा लगेगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, नववर्षের শুভকামনা, ঘরে থাকো, ভালো থাকো। And now it's a tagline for all of us. Okay, so today I want to start a new topic, obviously from the same chapter. New topic. The topic is electric field. So electric field, we represent it as capital E. What is the meaning of this? The definition of electric field is that in presence of charge particle, yeah, you can say source charge particle, if we introduce a positively test charge particle, force per unit at any point P, force per unit test charge particle is called
electric field. So what we can say, force per unit positive test charge particle is the electric field. That means suppose you have a source Q, and due to that Q charge at point P, which is at a distance r from the charge particle, if we want to calculate the electric field, so our first aim, according to definition, we introduce a test charge. When we introduce a test charge, so force is applied, we know 1 by 4 pi epsilon naught q naught by r square. So electric field is force by introduced charge particle 1 by 4 pi epsilon naught q naught by r square by q naught, that is 1 by 4 pi epsilon naught q by r square is the electric field. From this we notice some important points. First of all, the first important point is force is a vector quantity. So we can say yes, electric field is a vector quantity. That's the first point. What is the second point? Second point is the unit. SI unit of electric field is force per unit charge. That means Newton per Coulomb. Now if you want to find out the dimension, force dimension, we all know ml t minus 2, and dimension of charge is 80. So what we have, ml t minus 3 a minus 1. So we get the dimension, we get the SI unit, we know now electric field is a vector quantity. Some very important point regarding electric field. First important point is, if we see this formula 1 by 4 pi epsilon naught q by r square, that means our first point, electric field depends on the nature of the source charge particle. What do you mean by that? Depend on the nature of the source charge particle. Suppose you have a positive charge and at point P you have to find out the electric field. So nature is positive. As the nature is positive, electric field is away from the charge particle. So we can write E plus means source is positive and electric field is moving away from the charge particle. And it does not depend how much is the introduced charge. It does not depend how much is the introduced charge, because if we notice it, force per unit that introduced charge and that introduced charge cancel. So it does not depend on the introduced charge, it only depends on the source. If the source is positive, electric field is away. If the source is negative, at point P, electric field is towards. That is the first very important point. Remember this one, very important. The electric field depends on the nature of the source. If the source is positive, the field is positive, direction is away. If the source is negative, electric field is towards. This is the first point. Second important point is electric field is force per unit charge. So at the same time we can say force is electric field into charge particle. So now if we have electric field is given, suppose this is your electric field, and now if you introduce a positive charge particle, so that means force is applied on the direction. Means if you know the electric field, the direction of electric field, and if you introduce a positive charge particle, force is applied towards the charge particle, and if you have negative charge particle, force is applied in the opposite direction of the electric field, because here negative means reverse. Now our first question, although it looks a very simple question,
but it's a very important conceptual question which clear you so many concepts related to electric field. What is the question? Question is find the electric field intensity at A, B and C. तो देखो सबसे पहले तुम्हारा दिमाग में आएगा यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज नहीं है, इसका मतलब सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये तुम्हारा रॉन्ग कॉन्सेप्ट है. क्यों? मैंने पहले ही बोला इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी में कितना चार्ज है. ये डिपेंड करेगा तुम्हारा सोर्स में कितना चार्ज है. तो अगर मैं ए का बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए का बात करूं तो ए पे बी के लिए, ए पे बी के लिए मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू बी एंड बी इज नेगेटिव चार्ज. सो व्हाट वी राइट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू बी. अब मैं अगर बी पे बात करूं, देखो सी पे नहीं है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बी ड्यू टू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू ए. Due to A is positively charged, so the direction is away. अब अगर हम C पे आए, C पे देखो A के लिए भी हो सकता है, B के लिए भी हो सकता है. अगर हम C पे A के लिए देखें, the charge of A is positive, so at C due to A is away, at C due to B negative, so towards. So ये तुम्हारा फर्स्ट काम है कि to understand in which direction they are moving, away or towards. Now electric field at A due to B, so 9 into 10 to the power 9, 1 by 4 by epsilon naught. Now at A due to B, so your source is B, 4 into 10 to the power minus 6, and distance between A and B is 2 square, that is 9 into 10 to the power 3, unit is Newton per coulomb. If you want to show the direction, you can write in two ways, A to B, this is one way, or you can write in this direction means plus I. Now electric field at B due to A, electric field at B due to A, so 9 into 10 to the power 9 at B due to A, the source is A, how much? Minus 6 by 2 square, so what you have 4.5 10 to the power 3 Newton per coulomb. It is, you can mention B to C, or again you can say plus I, मतलब इस डायरेक्शन में. Now for C you have two electric field. Let the first electric field is at C due to A, 9 into 10 to the power 9 at C due to A. The charge of A is 2 into 10 to the power minus 6. Distance between A and C 2 plus 1 3, so 3 square. So what you have 2 into 10 to the power 3 Newton per coulomb, and it is away from this, मतलब you can write plus I. And at C due to B, at C due to B, the distance between B and C is 1, so 9 into 10 to the power 9, 4 into 10 to the power minus 6 by 1 square, 36, 10 to the power 3 Newton per coulomb, and it is in this direction, minus I. Now if you see it properly, these two are in the opposite direction and their magnitudes are different. As they are opposite direction, you subtract. If they are in the same direction, so you add them. So E net at C, that is E of CB minus E of CA. CB को पहले क्यों लिखा? क्योंकि इसका वैल्यू ज़्यादा है. तो 36 minus 2 into 10 to the power 3 minus I, that is 34 into 10 to the power 3 minus I. Minus मतलब net electric field is which direction? This direction, or you can say C to B, or you can say C to B. Thank you. Okay, my next question related to electric field is A, B, C, 3 charge particles there at A 2 microcoulomb, at B 4 microcoulomb, at C minus 3 microcoulomb. Question is find इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए. इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो. इस ए पे तुम्हारा चार्ज पार्टिकल है 2 माइक्रोकूलम, लेकिन वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज पार्टिकल ऑफ द पॉइंट जहां पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. सो सी
मुझे फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट आवर पेन एट ए. नाउ ड्यू टू बी एट ए, this source is positive, so electric field at A due to B is having, at A due to C is negative, so electric field at A due to C, that is towards the charged particle. Now electric field depend on the nature of the charged particle. This angle is 60 degree, this angle is 120 degree. So electric field at A due to B, देखो मेरा इस बात को समझो, due to B मतलब source is B, so 9 into 10 to the power 9, B is 4 into 10 to the power minus 6 by 1 square, that is 36 into 10 to the power 3 Newton per coulomb. At A due to C, 9 into 10 to the power 9, 4 into 10 to the power minus 6 by 1 square, 36 into 10 to the power 3 Newton per coulomb. तुम लोग फिर सोचोगे सर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज साइन क्यों नहीं दिया? When we show the direction, we just need the magnitude and magnitude is same. बहुत बच्चा ये गलत कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो इसको प्लस इसको माइनस करके नेट जीरो कर देगा, ये गलत है. यहाँ पे प्लस है तो एवे गया, यहाँ पे माइनस है तो टुवर्ड्स आया. इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंगल इज 120 डिग्री, सो E net at A is E of AB square, E of AC square, 2E of AB, E of AC cos 120 degree. We can take common 36 and 3 1 square 2 into 1 into 1 into cos 120 is minus half, that is 36 into 10 to the power 3, 1 plus 1 minus 1, that is 36 into 10 to the power 3 Newton per coulomb. Now if you want to mention the direction, that is E net, so you can write in two manner. One is plus I, or you can say parallel to BC or B to C. B to C, parallel to BC or B to C. इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में एक और बात है, देखो सेम क्वेश्चन हम लोग फोर्स में किया था, और अब हमें मालूम है फोर्स इज द इंट्रोड्यूस चार्ज पार्टिकल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पे इंट्रोड्यूस चार्ज कितना है? 2 माइक्रोकूलम. सो अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू के साथ इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूं इनटू 36 into 10 to the power 3, 72 into 10 to the power minus 3 न्यूटन, मेरा पहला वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स का वैल्यू आ जाएगा. और क्योंकि ये जो इंट्रोड्यूस चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वही फोर्स का डायरेक्शन होगा. अगर यहाँ पे माइनस होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स का जो डायरेक्शन है वो इस फील्ड का ऑपोजिट होता. नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स? Electric lines of force defined as in presence of electric field, if you introduce a positive test charge particle, force apply on the charged particle due to which the particle is in motion. The path or locus created by the charged particle is called electric lines of force. Simple में अगर देखें, सपोज इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को मानो हम लोग इंट्रोड्यूस किया. अब जब मैंने इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल को इंट्रोड्यूस किया, तो इस चार्ज पार्टिकल में फील्ड के कारण फोर्स लगेगा, इस फोर्स के कारण ये मोशन होगा, तो इस मोशन के कारण ये मूव किया. सो जब ये मूव किया, ये एक लाइन और ट्रैक क्रिएट किया. दैट लाइन और ट्रैक, द लोकस, इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स. अब इस इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का यू हैव सो मेनी प्रॉपर्टीज. द फर्स्ट properties is these are very important for board as well as entrance, because board में तुम्हारा आता है और entrance में इसके ऊपर concept पूछता है. तो first properties of electric lines of force. Electric lines of force appear to start from positive charge and terminate at negative charge. Appear to start from positive charge and terminates at negative charge. Second point is that the electric field. Second point is electric field always tangential to the electric lines of force. तो ये मेरा मानो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है,
और ये हम लोगों ने 3 पॉइंट चूज किया है। इस 3 पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेगा विच इज ऑलवेज टेंजेंशियल। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मीन्स टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर। Now the question is why? Because if they intersect at the point of intersection, ये मेरा intersection point है, at the point of intersection you have two electric field, ये एक, suppose this one is 1, this one is 2, but एक पॉइंट पे एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दो इलेक्ट्रिक फील्ड या दो डायरेक्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, so it is impossible। मतलब two electric lines of never intersect each other, because if they intersect at the point of intersection we have two directional electric fields in practical, which is not possible। Okay, next point is electric lines of force are continuous, smooth and without any breakage। Electric lines of force continuous, smooth, without any breakage। देखो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो बीच में ऐसा ब्रेक नहीं हो सकता है, so it is a continuous, smooth, without any breakage। अच्छा, next point is अगर मेरे पास ऐसे करके कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, सो ये फील्ड लाइन जितना अवे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीकर, और ये जितना क्लोज आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। मतलब यहाँ पे इफ यू मेंशन ए, दिस पॉइंट इज बी and this point is C, A and C are almost similar and B at B the electric field are away, so you can say A and C are almost same, which is greater than C। मतलब A और C का which is greater than B, so इसका मतलब A and C का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सेम है, which is greater than B, क्योंकि B पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ा अवे है। अच्छा, इसका और तो पॉइंट है, इसको ज्यादा डिटेल में मैं न्यूमेरिकल्स में बताऊंगा, मैं जस्ट इसको रीड आउट कर रहा हूं। द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू अ सरफेस। मतलब एक सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज नॉर्मल होगा ऑफ अ कंडक्टर ऑन विच द चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द लाइंस ऑफ फोर्स does not passes through a conductor, the lines of force does not passes through a conductor because electric field inside a charged conductor is zero। मतलब if you have a metal तो metal के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, जो भी होगा इसका आउटर पेरिफेरी में होगा, और दे आर नॉर्मल। ये जो एरो हम कर्व कर रहा है इसका मतलब इफ इट इज अ स्फीयर, वन इज दिस डायरेक्शन, वन इज दिस डायरेक्शन, वन इज दिस डायरेक्शन, वन इज दिस डायरेक्शन, वन इज दिस डायरेक्शन। अब इसको 3 डायमेंशन को हाउ वी मेक इट इन 2 डायमेंशन, तो 2 डायमेंशन में ये कर्व दिखा रहा है कि दे आर नॉर्मल।